हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है, जब दो एटम के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। सिर्फ उसी प्रकार से जब हम उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है और जो एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन में रिलीज होती है, वो दोनों एनर्जी सेम होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। बट इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, यहाँ पर तो हम ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दो एक जैसे एटम है, उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन रहा है। हम यहाँ पर उसकी बॉन्ड एनर्जी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास अगर ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं, जैसे मेथेन मॉलिक्यूल है, तब हम यहाँ पर किसकी बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करेंगे? चार बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के साथ, सारे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हैं। तो हमारी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? जैसे जैसे बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा उसकी एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारी एनर्जी होगी, जो बॉन्ड एनर्जी होगी, वो क्या होगी? सो इन द केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, हम बॉन्ड एनर्जी एवरेज बॉन्ड एनर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। टोटल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एवरेज हमारे पास आएगा, वो यहाँ पर एवरेज बॉन्ड एनर्जी के नाम से जाना जाता है। सो इन द केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी and it may be defined as the average amount of energy required to break all the bonds of a particular type in 1 mole of the substance. While in the general cases, general molecule, जब हमारे पास दो एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, it is may be defined as the energy required to break a particular bond is called as bond energy. And both the types of energy can be written in the following way. When a bond is formed, the energy is released, while the time of breaking of this bond energy must be required, and both these energies will be equal. At the time of breaking of a bond, the energy must be supplied equal to the released energy at the formation of bond. This energy supplied is called as bond
energy, and it may be defined as the energy required to break a particular bond is called as bond energy. For example, thus the bond energy of HH bond in H2 molecule is the energy required to break all the bonds in 1 mole of H2. It is expressed in kilojoule per mole or kilocalorie per mole. For example, the bond energy of hydrogen is 433 kilojoule per mole. Similarly, chlorine 243 kilojoule per mole, and for O2 499 kilojoule per mole. But in case of group of atoms, the bond energy is expressed in terms of average bond energy. It may be defined as the average bond energy may be defined as the energy required to break all bonds of particular type in mole of a substance. इसी सब्सटेंस के 1 मोल में पर्टिकुलर टाइप के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी से हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ मेजर होती है। जितनी हाई बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड होगा। सो बॉन्ड एनर्जी is the directly responsible for the strength of a bond. Bond energy is the measure of the strength
of a bond. Greater the bond energy, greater will be the strength of the bond. Bond energy depends upon the following factors, such as number 1, electronegativity, number 2, size of atom, and number 3, bond length. बॉन्ड एनर्जी 3 फैक्टर पर डिपेंड कर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज ऑफ एटम एंड द बॉन्ड लेंथ. Now we will discuss these factors in very short for the bond energy. Bond energy is directly proportional to the electronegativity of atoms, that is greater the electronegativity, greater will be the bond energy. Bond energy proportional to electronegativity. Bond energy is inversely proportional to the size of atoms, that is smaller the size of an atom, greater will be the bond energy. And third is the size of bond strength. Bond energy is directly proportional to the bond strength, that is greater the bond strength greater will be the bond energy. इस प्रकार से ये 3 फैक्टर यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करते हैं. नाउ एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड. हम यहाँ पर एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम उसको कैलकुलेट करेंगे. एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ bond. Average bond
dissociation energy of a bond in a molecule may be defined as the atomization energy of the molecule divided by the total number of bonds present in the molecule. Average bond dissociation energy of a bond in a molecule may be defined as the atomization energy of the molecule divided by the total number of bonds present in the molecule. Thus, average bond dissociation energy of a AB bond in ABN molecule is equal to sum of successive bond AB dissociation energies divided by total number of bonds AB in the molecule. इस मॉलिक्यूल में जितने भी AB बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ CH4, average bond dissociation energy is equal to total bond dissociation energies of the 4 carbon hydrogen bonds divided by 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इस प्रकार से 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं मेथेन में, तो उन 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टोटल डिसोसिएशन एनर्जी को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेथेन मॉलिक्यूल की एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्राप्त हो जाती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इन दिस टॉपिक इज द रिजोनेंस एनर्जी. जो रिजोनेंस एनर्जी होगी वो किस प्रकार से डिपेंड करेगी, वो क्या होती है. रिजोनेंस एनर्जी जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू जिन मॉलिक्यूल का सिंगल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है. और ये एक्सप्लेन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन. जो यहाँ पर रिजोनेंस हाइब्रिड के मोर स्टेबल होने का रीज़न है वो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के रूप में हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम रिजोनेंस एनर्जी के नाम से जानते हैं. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट a resonance hybrid is found to be more stable in comparison to any single discrete
structure. This can be explained in terms of energy of stabilization. Which is called as resonance energy. For example, benzene with 3 double bonds release energy equal to the 119.6 into 3 is equal to 358.8 kilojoule per mole as heat of hydrogenation. But actual value is 208.3 किलोजूल पर मोल। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व होती है जो वहाँ पर होनी चाहिए वो 358.8 किलोजूल पर मोल होती है, बट यहाँ पर जो एक्चुअल में ये वैल्यू शो करती है वो 208.3 किलोजूल पर मोल के बराबर होती है। जो यहाँ पर डिफरेंस इन एनर्जीज है जो हमारे पास इस एक्चुअल वैल्यू में और जो होनी चाहिए वैल्यू, उस वैल्यू में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 150 पॉइंट समथिंग किलोजूल पर मोल आता है और शायद यही रिजोनेंस एनर्जी होती है। इसी रिजोनेंस एनर्जी के कारण ही ये बेंजीन मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाता है। दिस difference of energy 358.8 minus 208.3 is equal to 150.5 kilojoule per mole is called resonance energy due to more stable hybrid structure। इस तरीके से यहाँ पर बेंजीन मॉलिक्यूल हाइब्रिड स्ट्रक्चर के रूप में इतनी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी को शो करता है और ये हाईली स्टेबल हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जितनी ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल हो जाता है। सो द रिजोनेंस एनर्जी इज द डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। और एरोमेटिक कंपाउंड की अगर हम पर्टिकुलर रूप से बात करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रिजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। और जिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू दैट मॉलिक्यूल विच कैन नॉट फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनने के बाद वहाँ पर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, दैट इज़ वहाँ पर रिजोनेंस एनर्जी होती है। तो रिजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबल वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस प्रकार से ये बॉन्ड एनर्जी और रिजोनेंस एनर्जी और हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है, जिसको हम इस प्रकार से यहाँ पर आज डिस्कस किए। थैंक यू।